आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, অসমৰ সম্মানীয় राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, আজি আমাৰ এই সভাত উপস্থিত most respected Lieutenant Colonel retired Kaji Sajjad Jahir ji, Chief Secretary Assam, Air Marshal D.K. Patnaik, Lieutenant General R.P. Kolita, Vice Admiral D.K. Tripathi, Sri Bikram Doraisamy, Indian High Commissioner to Bangladesh, Bharat Bangladeshor যুদ্ধত শৌৰ্য আৰু বীৰত্বৰ পৰিচয় দিয়া আমাৰ সামৰিক বাহিনীৰ সেই সময়ৰ জোৱান তেখেতসকলৰ পৰিয়াল আৰু শহীদ পত্নীসকল, অসম চৰকাৰৰ মোৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰীসকল, অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ শ্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, সন্মানীয় সুধীবৃন্দ। It is indeed my pleasure to welcome Honorable Raksha Mantri Sri Rajnath Singh ji to this momentous occasion here today. At this historic event, we have assembled here to celebrate the great contribution of the war heroes of Assam who played an important and invaluable role in the Indo-Pakistan War of 1971. This program is a committed endeavor from our side to honor our brave soldiers who made supreme sacrifice and endured tremendous suffering while taking part in the war, responding to the call of the nation. At the outset, I therefore salute the bravery of the war veterans of the Indo-Pak War of 1971 and offer my deep tribute to all the soldiers who laid down their lives in the line of duty. At the same time, I also thank Honorable Raksha Mantri Sri Rajnath Singh ji for his presence at this historic occasion, which is indeed a recognition of the importance of Government of India places on the war heroes and their sacrifice. मैं असमवासी का ओर से हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने समय निकाला और हमारा बीच आने का कष्ट किया। हम सब हमारे जो वार हीरोज था सबको एनकरेज करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, अपना ग्रेटिट्यूड प्रकट करने के लिए रक्षा मंत्री जी यहाँ आके उपस्थित हुआ। मैं असम वासियों का ओर से राजनाथ सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। The Indo-Pakistan War of 1971 was a landmark event in the history of the Indian subcontinent. The valor and sacrifices of our war heroes not only registered historic victory of our country over Pakistan, but also played a decisive role in realizing the dream of an independent Bangladesh. We are aware that the Indo-Pak War of 1971 came to an end while the signing of Instrument of Surrender of Pakistan Eastern Command on 16 December 1971. This was the successful culmination of a war that witnessed an unconditional surrender of 97,368 defense personnel of the Eastern Command of Pakistan, which was the second largest surrender of the heavily armed military personnel since World War II. This simple fact is a testimony of the indomitable spirit and courage of Indian Army, Air Force and Navy. আজি আমি এই সুন্দৰ দিনটোত আমি ভাৰতৰ সেনাবাহিনী, বায়ু সেনা আৰু নৌ সেনাৰ বীৰত্ব আৰু শৌৰ্যক
পুনৰবাৰ প্ৰণাম কৰিছোঁ, যাৰ সন্মুখত ৯৭,৩৬৮ জন পাকিস্তানী সেনা সশস্ত্ৰ সেনাই বিনা স্বত্বে আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত এনেকে বৃহৎ আত্মসমৰ্পণ এক ঐতিহাসিক ঘটনা আছিল আৰু এই ঘটনাই ভাৰতৰ সেনাবাহিনীৰ পৰাক্ৰমকে পুনৰ এবাৰ আমাৰ সন্মুখত দাঙি ধৰে। সেইসকলৰ প্ৰতি মই মোৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু অসমবাসীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভাৰতীয় সেনাবাহিনী, নৌসেনা আৰু বায়ুসেনাৰ ওচৰত। The Indo-Pakistan War of 1971 has left an indelible mark in our history as the sacrifices of countless heroes of Indian Army and paramilitary forces continue to inspire us even today. During that war, 9 valiant soldiers from Assam, Krishna Mohan Rajbongsi, Ganak Chandra Roy, Ram Bahadur Setri, Badri Singh, Narayan Kolita, Thojendra Rabha, Suren Chandra Bosumotari, Hemkantra Kolita, and Khorgeswar Lalung made supreme sacrifices. Many sustained injuries but survived. Many led to the battlefront with outstanding leadership. All these war veterans keep us inspired with their unflinching patriotism and commitment to Mother India. However, Assam's role in this war was not confined to battlefront alone. Some of the police officers from Assam trained and equipped freedom fighters of the Mukti Bahini to take on the Pakistan army. 2 of them, Gyanananda Sharma Pathak Aru Birajananda Chaudhuri, belong to the Special Security Bureau. The guerrilla wing of the RAW played an important role in the liberation war. Beside Pathak and Chaudhuri, D.N. Sonowal and Hiranyakumar Bhattacharya, both belonging to the Indian Police Service, were engaged in different roles in the operation. D.N. Sonowal served in the SSB on deputation at Salonibari when the training sessions were done. Bhattacharya in 2013 was invited to Bangladesh and awarded Friends of Liberation War honor for his role in training a batch of Mukti Bahini in close combat practice. অসমৰ সেনা বাহিনীৰ উপৰিও আমাৰ ভাৰতীয় পুলিচ সেৱাৰ বিষয়াসকল, বিশেষকৈ জ্ঞানানন্দ শৰ্মা পাঠক, বিৰাজানন্দ চৌধুৰী, D.N. সোণোৱাল আৰু হিৰণ্যকুমাৰ ভট্টাচাৰ্যয়ো সেই যুদ্ধৰ সময়ত অপূৰ্ব দেশপ্ৰেমৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছিল আৰু ভাৰতীয় সেনাবাহিনী আৰু বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনীক বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰিছিল। Apart from the government's help and cooperation, the way in which the people of Assam extended their helpful hand to the Mukti Juddhas and the refugees was something unique and phenomenal. In this context, I'd like to first mention Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika, whose songs had an electrifying effect on the Mukti Juddha. His song, Jaya Jaya Navajato Bangladesh, Jaya Jaya Mukti Bahini, written as triumphal salutation to the newly sovereign Bangladesh and to the freedom fighters, still rings the hearts of the people. He was also awarded Friends of Liberation War honor by the Bangladesh government. The civil society of Assam, especially those who lived in Barak Valley, came forward in a remarkable manner to help the refugees who had came from East Bengal. They not only had given shelter to the refugee, but also provided very
logistic support to the freedom struggle. असम के बराघाटी के लोगों भी पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों की मदद के लिए आगे आए थे. उन्होंने न केवल शरणार्थी को ही आश्रय दिया था बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों को भी विभिन्न प्रकार से सहायता किए थी. The role of Assam civil society in this war is also a testimony of the serious relationship that India shares with Bangladesh. Recently, to mark 50 years of India's victory over Pakistan in the 71 war, we celebrated Swarnim Bijay Bars, which also coincided with the 50 years of independence of Bangladesh. It is a notable coincidence that both India and Bangladesh are celebrating their 75th and 50th independence of their nationhood respectively. We understand that while our brave hearts keep us secure, we also at the same time have a bounden responsibility to stand by them and their families. I am glad to inform you that fulfilling our commitment, our government has initiated number of steps, including ex gratia of rupees 50 lakhs to the next kin of deceased army personnel, one job for their next of kin, reservation of 2% job in group A, B, C, D of Assam government, reservation of seats for their wards in medical college. We are also planning several other initiatives for their welfare, expressing our solidarity and gratitude to them. रक्षा मंत्री जी, मैं ये बोलने से मेरा गौरव होता है कि हमारा सरकार ने ये जो 11 महीना का सरकार चला, उस समय हमने एक सर्विसमैन का कल्याण के लिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय किया. मेडिकल कॉलेजों में हमारे एक सर्विसमैन का बेटा बेटियों के लिए सीटों का जो रिजर्वेशन था उनमें बढ़ावती किया. ग्रुप डी और सी का जॉब रिजर्वेशन 2% जो एक्सपायर हो गया था उनको दोबारा हमने रिन्यू किया. और साथ साथ ग्रुप ए और बी में भी कल ही हमारा कैबिनेट ने निर्णय लिया कि एक सर्विसमैन के लिए 2% जॉब का रिजर्वेशन होगा. पहले हमारा जो एक मुआवजा बोलिए, कॉम्पेंसेशन बोलिए, रेस्पेक्ट बोलिए, जो बैटलफील्ड का कैजुअलिटी है उनको 20 लाख रुपया हम लोग देते थे, उनको अभी 50 लाख तक बढ़ाया. और कल कैबिनेट में निर्णय लिया कि ये 50 लाख का साथ उनका निकट परिवारजनों को एक सरकार में नौकरी भी दिया जाएगा. हम ये बोलते हुए हमारा फक्र होता है, गौरव होता है कि हमारा जो असम है वो बहुत ही ग्रेटफुल स्टेट है और आगे भी हम सेनाओं का जवानों के लिए जो भी संभव होगा सरकार का ओर से वो हम लोग करते रहेंगे. We know whatever we do for our armed forces, we never commensurate the sacrifice they make to protect our national interest and keep us secure. Still, we have made humble effort through this program to pay our respectful tribute to our war veterans and their martyred soldiers who made lasting contribution to the Indo-Pakistan War of 1971. Ami কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে ভাৰত বাংলাদেশৰ সেই বীৰত্বপূৰ্ণ যুঁজত অংশগ্ৰহণ কৰা আৰু চৰম আত্মবলিদান দিয়া, পাকিস্তানত প্ৰিজনাৰ্ছ অফ ৱাৰ হৈ থকা আৰু যিসকলে পাৰ্মানেণ্টলি দিব্যাংগ হ'বলগীয়া হ'ল সেই সকলোকে আজিৰ এই অনুষ্ঠানত আমি একত্ৰিত কৰি নিমন্ত্ৰণ কৰি কিছু এক ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মানস কৰিছোঁ. আমি যিসকল বীৰ নাৰী, যিসকল প্ৰিজনাৰ্ছ অফ ৱাৰ আছিলে বা যিসকল বেটলফিল্ডত কেজুৱেলিটি হৈছিলে তেখেতসকলক প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কৰ কমলেৰে সম্বৰ্ধনা জনাম আৰু বাকীসকলৰ লগত এই সভাৰ পিছত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এখন ফটোগ্ৰাফ উঠিব
যাৰ জৰিয়তে আমি সেই ফটোগ্ৰাফখন অসমৰ বুৰঞ্জীত আমি সোণালী আখৰেৰে লিপিবদ্ধ কৰি ৰাখিম। मैं भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका का गीत कत जवानर मृत्यु होल के कुछ पंक्ति उसका साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। हालांकि ये गीत भूपेन दा ने 1962 के भारत सिंह युद्ध के दौरान लिखा था, पर इस गीत के भावों से हमेशा हम बहादुर सैनिकों के लिए सम्मान प्रकट करते हैं। ब्रह्मपुत्र के इस कवि संगीतकार ने लिखा था, कत जवानर मृत्यु होल कार जीवन যৌবন গল, সেই মৃত্যু অপৰাজেয় তেনে মৃতক নহলো মই কিয়, আৰু মৃত মৌন শত জোৱানলে মোর অশ্রু অঞ্জলি যাচিলো। कोई जवानों के मृत्यु हुए कितनों का जीवन যৌবন बीत गए, ये मृत्यु अपराजेय अगर मैं भी इस मृत्यु का अनुभव कर पाता, और इन मृत जवानों को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, भूपेंद्र ने लिख के गया था। एक बार फिर 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के वीरों को सलाम करता हूँ और शहीदों को अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और इसी के साथ अपना शब्द को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। मैं उल्लेख करना चाहूँगी कि युद्ध के शूरवीरों को सम्मानित करने के लिए इस कार्यक्रम ने जो आकार लिया वो असम के माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल और सक्रिय नेतृत्व से ही संभव हुआ है। धन्यवाद महोदय।